So, can you see my screen now? Yes, sir. Very good. So, what we are going to do today, what you are going to do the practicals is on this. Okay. So this is known as what? Just a minute. Again, not responding. Someone waiting. Let them admit. Okay. So Fibonacci number, right? Have you heard about this? Hello. Sir. Yes. Have you heard about the Fibonacci number? Yes, sir. Okay. So all of you please concentrate because today I'll keep the time constraint. मतलब 1 बजे के बाद जो मुझे मिलेगा वो I'm not going to accept that. You have to do it by the time period because from last few lab series I'm again not going to mention the names, but it is really surprising the names that I have found who are not regular or who are not submitting the lab works once used to be very sincere, but this time why they are doing like that, I don't know. But it's the time that you can what I can say that make yourself sincere towards this. And so today by 1 p.m. you are going to all complete all these things and you will submit this. And what about the links that I have given? Are you submitting regularly there? I know that who are submitting regularly. I'm asking others. Tell me by yourself. अगर सबमिट नहीं कर रहे हैं आप लोग तो मैं बता दूं आप लोगों को कि ये आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? जिन जिन लोगों ने सबमिट नहीं किया है उसका लिस्ट मेरे पास है, तो वो भी डेट वाइज कि ऐसा नहीं है कि लास्ट लैब आज आप सबमिट करोगे और वो एक्सेप्ट किया जाएगा, बिल्कुल नहीं, उसी दिन सबमिट किया जाना चाहिए और उसी दिन ही एक्सेप्ट किया जाएगा। बाद में आप सबमिट करोगे तो उसका मार्क ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है? मैं पहले पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ बाद में, ताकि आप लोगों का मार्क्स कम हो जाए तो आप लोगों को बुरा लगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? उस समय हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वी आर डूइंग दिस टू मेक यू सिंसियर, ओके? और जो जो नेम्स हमें मिला है इससे में जो रेगुलर नहीं मिल रहा है, तो वो भी मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोग खुद सुधर जाओ, ठीक है? सो लेट्स कम बैक टू द क्लास. सो अबाउट द फाइबोनाची नंबर्स, you know, suppose 0, 1, my screen is visible to each of you, right? Yes, sir. Yes, sir. Very good. So you can see that 0, this is the first number. 1, then 0 plus 1, this is 1, right? A number to ये नंबर कैसे मिला है? हमने ये दो को ऐड किया है, राइट? सिमिलरली इन दोनों को ऐड करने के बाद मुझे क्या मिला है? 2. Similarly, I'm adding this 2 and I'm getting this 3. This 2, this 5. So overall, what is the formula that I'm using here is that Fn is equal to Fn minus 1 plus Fn minus 2. All of you are ready with that? Means that why you are using this formula Fn is equal to Fn minus 1 plus Fn minus 2? Yes or no? फर्स्ट जो प्रीवियस 2 टर्म्स है Yes, उसको sir. ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है? यही चीज कर रहे हैं, वेरी गुड. नाउ अब ये तो ठीक है. In mathematics, the Fibonacci numbers commonly denoted as Fn form a sequence known as Fibonacci sequence, such as each number is the sum of the two preceding numbers starting from 0 and 1. अब क्या है, ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गया. अब मैं इससे रिलेटेड आई एम गोइंग टू deal with 3 programs related to this Fibonacci number. ठीक है? अब ये जो 580 जो 3 प्रोग्राम है आप लोगों को क्लियरली नोटिस करना है और ये इम्प्लीमेंट करना है. उसके साथ साथ मुझे बताना है कि ये स्टेटमेंट जो कि मैं यहाँ लिख के भी रखा हूँ कमेंट में कि क्या ये स्टेटमेंट ये क्या कर रहे हैं, बट इन योर ओन word you need to explain the program after implementing it. I hope you got it that what I meant to say through this. Yes or no?
Yes, sir. Okay, let's come to the first program which I have named as Fibo 0. दिखाई दे रहा है ये आप लोगों को? तो मैं हम what we are doing? Yes, sir. रेस्पॉन्स देते जाना. हाँ ठीक है. डेफिनेशन DEF Fibonacci and if n is less than equal to 0. अगर आपने जो इनपुट किया, what input you have provided is n, right? If that number is less than equal to 0, ये क्या फाइबोनेची नंबर हो सकता है? नहीं. ठीक है. क्यों? मैं अभी आप लोगों को बताया था कि जो डेफिनेशन मैंने दिया था आप लोगों को क्लियरली नोटिस करना था. क्या था? 0. मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूं. 1 1 2 3 5 and goes on. Okay? Yes or no? यही था ना? Sir. तो मैंने इनपुट किया सपोज -3. Now you tell me whether this -3 will be a Fibonacci number or not. Not at all, sir. No, sir. Okay, so that's what we are No, to sir. do for this statement. If n is less than equal to 0, then print incorrect input. ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को बाकी सारे प्रोग्राम्स को भी ऐसे ही एक्सप्लेन करके विद एक्सप्लेनेशन आपको सबमिट करना है. फर्स्ट यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम. जो मैं प्रोग्राम आपको सीधा सीधी दे रहा हूँ, आप जस्ट स्क्रीनशॉट लेके रखिए और खुद करोगे. सेकेंड, लाइन बाय लाइन क्या हो रहा है इस प्रोग्राम में और ओवरऑल क्या कर रहे हो, ये जो अभी मैं बता रहा हूं ऐसे आप एक्सप्लेन करोगे. ठीक है. तो जो if n is less than equal to 0, then this will be incorrect input. Now elif, ये किस लिए हम यूज करते हैं? Sir, else if. वेरी गुड. सो if है, if statement के साथ हमने क्या लगा है? What we have put here is else if. Okay. So if statement is not correct, suppose now if statement if condition is not fulfilled, we will come to this elif because this is a nested if. What I have said just, this is a nested if else statement. एक if के अंदर else के अंदर if के अंदर ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम? nested if else statement. ठीक है. तो now elif if n is equal to 1, then return 0. क्यों? क्योंकि जब जब ये क्या है आपका? फर्स्ट नंबर है. yes or no? response दीजिए quickly. give me the response quickly. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो first, so if n is equal to 1, this is the first number, then what is that Fibonacci number? 0. So that's why we are returning 0 here. Now, else if n is equal to 2, then return 1. Else if, माना ये else if portion complete, अभी last वाला else है, this is the last else. So that is else return the general sequence Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2. ठीक है. ये definition clear हो गया. Now we have actually you define this function. Now we are going to print any random number. Any random number means any random term of that Fibonacci sequence. So let's see, this is Fibonacci 6. ठीक है. तो ये करके देखते हैं हम. You all know how to run the program. कौन सा बटन क्लिक करूंगा मैं अभी बताओ? Which button? The green one. So pause button. Okay. 5 आ गया. ठीक है. क्या सही है ये? Is the output 5 is okay? Correct or not? Yes, sir. So fifth, sixth वाला जो टर्म है वो सिर्फ प्रिंट कर रहा है. 0 to 5. फाइव. Yes, sir. Sixth वाला जो टर्म है वो प्रिंट कर रहा है. आप समझ में आ गया? What this program is for? Sir. ऐसे ही आप Yes, लोगों को sir. हर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके हर एक लाइन स्टेटमेंट को समझना है. मैं ये जस्ट इसका एग्जांपल दे रहा हूं. सपोज लेट्स मी चेक अनदर वन. आई एम राइटिंग हियर. See, I want to check the 10th
term. Okay, I want to print that. So now you just tell me if I want to just print this statement, then which out of this button, which one I'll press? कौन सा वाला? ये 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 कौन सा? जल्दी बताओ, Fourth one. बाकी लोगों से भी सुनना चाहता हूँ. I want to hear from others also. Tell me which one. This one, this one, this one. If I want to execute only this line, then which one I have to press? Sir, fourth. Others from others. अभी आप लोग कितने जन हो? सब लोग बताओ. हिमांशु ने बताया सर अभी. So fourth one. सर जो Okay. प्रोजेक्ट के नीचे मतलब लेफ्ट साइड में है वो वाला बटन है सर. Okay. Good. Very good. So this harsh program is now clear to you. Just take a screenshot of this. Although I'll give you the recorded link also. Take a screenshot of this. You'll start doing it immediately after the class. Okay. Now coming to the next program. अब ये program देखो. Import match. This is also related to Fibonacci. Okay. Define is perfect square as integer match dot squared x. Return s cross s equal to x. So what I'm doing here, just to क्लियर check. कर रहे हैं सर 2 × 2. Yes. To check if x that particular input you are providing is perfect square or not. Okay. Let's execute this. Now, this one. Define is Fibonacci and is the Fibonacci if 1 plus 1 of this. I'm writing here. You can see check here. The perfect square. Suppose अब मैं इसको बहुत ज़्यादा explanation नहीं करूँगा. I'll check that whether you guys are going to do that or not. ठीक है. तो ये इसमें मत जाना क्योंकि ये मैं इसलिए आ रहा है. I'm not running the whole program at a time. That's why it is coming. Now, look at this line very carefully. ये जो line है, look at here. So what actually we are doing? Can you guess anything? Come on, fast. I want the answer within 10 seconds. क्या कर रहे हैं हम इस लाइन से? ये जो कोड स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं हम, why I am using that? सर पहला जो लाइन है उसमें लिखा है कि n इज अ Fibonacci. अगर वो 5 × n × n + 4 और 5 × ये अगर सेटिस्फाई होता है तो. ओके. तो ये सर करके इज अ देखो. परफेक्ट स्क्वायर. अभी ये करो. यस सर. n लो, कोई भी n लो. सपोज मैंने आपको दे दिया n is equal to 3. Now tell me, is it satisfied or not? Are you getting me what I'm saying? Sir. You want to say like this, no? That I'm putting here and Yes, sir. what is the result I have got? Come on, first. What is the result I have got? 49. 49. Is it a perfect square or not? Yes, sir. Yes. Okay. all of fast Yes, sir. all of 7 quick × होगा, 7. okay. हाँ, थोड़ा क्विक हो जाइए, ठीक है. फास्ट आंसर देना. Sir, মানে কি হৈছিল sir, মানে ঘৰত सर ये মানুহ माइक আহিছে, मतलब ग्लिच हो সেইকাৰণে जाता है. অসুবিধা হৈছে। Wait. See. Forget about your personal problems. If any problem you are getting, just mute your mic. You'll get the recorded lecture. Okay. You'll go through it. Now concentrate what I'm saying. That this is 7, right? This is a perfect square. 49 is a perfect square. 7. So what Yes, I sir. mean to say that when I have put n is equal to 3, then I have got a result that is a perfect square. And if you look at the sequence 0, 1, 1,
2, 3, 5. You can clearly notice that this T is here. तीन तो ऐसे तीन है ना यहाँ पे? अरे भाई रेस्पॉन्स दीजिए, Yes, जल्दी sir. जल्दी रेस्पॉन्स दीजिए। हाँ ठीक है, तो तीन है यहाँ। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? तीन एक फाइबोनाची नंबर है या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये तो मैंने यहाँ चेक नहीं करके डायरेक्ट ये इक्वेशन से देख लिया कि हाँ yes 3 is a Fibonacci number. Now you have got it why I have defined this function here. Okay, I think that it doesn't need any further explanation. You got it, but you have to write exactly what I have just explained. Okay, so similarly, you can check for this one also. Now, suppose you want to check that numbers from the range 1 to 11, then you can check that whether is that each of that number is Fibonacci or not. You can just run this piece of code for I in the range 1 to 11. Again, range function. I'm again going to ask you one thing, that I have included 1 to 11. Now, quickly give me the answer that what are the numbers that is being included in this range. First बता दीजिए क्या क्या नंबर होगा? 0 to 10. So 0, 1, हाँ, comma 1, comma 2, comma 3, हम्म, and 5, हाँ, comma 8. सर इतना तक ही होगा। 8 + 5 13 हो जाएगा सर। क्यों? रेंज मैंने रेंज 1 to 11 के बारे में पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि Yes, रेंज sir. 1 to 11 के अंदर क्या क्या नंबर्स आएगा? 0, 1, 2, 3, So 4, 1 5, इंक्लूड होगा 10 तक। 4, बाकी 5, सबसे 6, भी 7, आंसर 8, चाहिए मुझे। 9, 10. ओके, ठीक है। Now, if is Fibonacci 1 is equal to 2, now what I have done here is that Boolean true or false. I'm checking that only. Okay, if it is true, then this will be printed. If it is false, this will be printed, right? So you can take the screenshot now. So you can see Sir. the output is coming like that. One is a Fibonacci number, 2 is a Fibonacci number, 3 is a Fibonacci number, 4 is not a Fibonacci number, 5 is a Fibonacci. Similarly, 6, 7, 8, 9, 10 is not. Now here 0 is not included, but just when I have asked you range 1 to 11, what are the numbers that is being included? You have said that 0 is also included. So these are the small things that you have to notice very carefully, right? We have said that. I think तो मैंने बोला था कि फेवोनी की सीरीज क्या होगा, तो मैंने 0, 1, 2 नहीं आप सही हो, थोड़ा आपके बोला। नहीं मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, आप जो बोला था आपने सही, आपने जो बोला था सही था, बाकी और एक दो जन ने भी बोला। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये सिंपल जो फैक्ट्स हैं यू हैव टू नोटिस वेरी केयर। नाउ ये वाला प्रोग्राम तो पूरा ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जो कि मैं नहीं करने वाला था। मैं चाह रहा था आप लोग एक्सप्लेन करोगे, कोई बात नहीं, बट आप लिखोगे ध्यान से अच्छे से। ये जितने भी स्टेटमेंट मैंने अभी बताया है फंक्शन, हर एक फंक्शन के बारे में, यू आर गोइंग टू राइट इट। यस, each of you okay with that or not? Yes, sir. Okay, now I'm coming back to the third program, 502, right? Let me clear this. Clear Correlo issue. Okay, now what we try to do here, see, define find position kn f10 f21 I is equal to 2 while I is not equal to 0, f2 is equal to f1 plus f2. यहाँ एक्सप्लेन करने के लायक कुछ नहीं है, आप समझ ही रहे हो। f1 is being assigned f2, f2 is assigned to f2. If now you tell me what I am doing here, ये सिर्फ ये सिंगल पीस ऑफ कोड में ध्यान दो। Now tell me what is going on here. देखो यहाँ क्या क्या पैरामीटर्स मैंने लिया है, k सर ये comma रिमाइंडर f. वाला ऑपरेटर है, मॉड्यूलर ऑपरेटर। ओके, जैसे f2 का जो भी नंबर है 1 डिवाइडेड बाय k का वैल्यू सर
सर k का वैल्यू क्या है सर? इधर ये पे तो k कुछ है देखो, लिखा नहीं है, वो तो शायद। यस सर। हम ठीक है, मैं फिर से बोल ही देता हूँ आप लोगों को। ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, दिस पाइथन प्रोग्राम इज टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ nth मल्टीपल ऑफ a number k in a Fibonacci series. What is that k and what is that n? Now it is very clear to you. If f2, let me write with more visibility, means this should be doing okay. Now if f2 reminder means with respect to k is equal to 0, then return is equal to n cross I. ठीक है, and I value is time incremented by 1. ठीक है, और ये कब तक होगा? when I is not equal to 0. Return. Now say let's take the value for n as 5 and let's take the value for k as 4. ठीक है, मैंने n और k का वैल्यू डिफाइन कर दिया, क्या? 5 and 4. I want to now print this position of nth multiple of k in Fibonacci series. Find position k comma n. Okay, so let's execute this. क्या आया है आउटपुट? Position of nth multiple of k in Fibonacci series is 30. अब आप लोगों को, अब मैं फिर से इसको भी एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगा, ध्यान से पूरे स्टेटमेंट, यहाँ स्टेटमेंट मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक एक स्टेटमेंट मैंने बता दिया हूँ. You need to find out that how this output coming here, when what actually it reflects. Yes, this is clear to everyone. यस सर। Yes, sir. Okay, so now it is exactly 12:02. I'm giving 1 hour of time to complete this. Means by 1 p.m. each of you. Okay, I said each of you means each of you should post this, means all they should do this all 3 programs, implement them, write the programs with each line explanation and send it back to me in the group. Okay, that's all for today. I hope there is no such any confusion. So with this, I'm stopping.